Good evening to all of you. Is this audible, visible, everyone? All clear? All clear? कौन देखुला हमें last class? What is the topic of discussion in last class? कौन चल थिला last class रे? Last class रो topic of discussion थिला हमारा. Last class रो topic of discussion कौन थिला? RBI banking sector ऊपर हमें discuss करथले ना. Last class रे हमें banking sector, banking in India, banking, digital currency, digital payment revolution in India. ये सब पार्ट, ये सब important topic हमें last class रे discuss करथले. So आजिर क्लास रे हमें डिस्कस करिवा अबाउट एग्रीकल्चर इनिशिएटिव्स स्पेशली इन ओडिशा इंक्लूडिंग इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी केमती यूज करा जिवो, फिशरीज लाइवस्टॉक रो कंडीशन कोन, मिलेट मिशन सबुठ इंपोर्टेंट मिलेट मिशन एउठु हमें आजिर क्लास स्टार्ट करिवा. मिलेट मिशन ना समस्त सुनिथियो माउच ओडिशा मिलेट मिशन OMM बोली जाको कहा जाए. और ये सबू जहां हमें डिस्कस करछे ये सब गुडा को मेंस रिलेटेड टॉपिक जहां डिस्कशन करूछे हमें ये सब गुडा को मेंस रिलेटेड टॉपिक हैला. प्रीलिम स्पेसिफिक डिस्कशन हमें प्रीलिम्स पूर्वरु करिथिले, वर्तमान मेन स्पेसिफिक क्लास करूछे. हो तो आरंभ करिया हमें OMM बा ओडिशा मिलेट मिशन नु. ओडिशा मिलेट मिशन यार ना सुनिचनी समस्त ना आज फर्स्ट टाइम 2017 it was launched. मिलेट कौन? फर्स्ट मिलेट्स कौन? व्हाट आर मिलेट्स? जेने में सीरियल्स खाउचे ना, चाउल गहम खाउचे, सेम मिलेट हला कौन? इंस्टेड ऑफ द सीरियल्स जोटा को हम कंज्यूम करछे दैट इज मिलेट. जेमति कि मांडिया हला, जौ, बाजरा, ओट्स. ओट्स कहि पारो न भी कहि पारो बट मांडिया बाजरा ये सब गुडा कास्पे कहबे त ना मिलेट भीतर आसे. So government of Odisha रा ऑब्जेक्टिव होउची to revive the traditional millet cultivation and to restore these climate resilient nutritious grains. Now this is very important. They are climate resilient and climate change has very less impact on them. Climate change impact मान को ऊपर बहुत कम and they are nutritious. Nutritional values अच्छे टी बहुत. and they are nutritious nutritional values अच्छे बहुत अधिक अच्छे. For example मु कहबी कि रागी 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 डाला कौन? मांडिया का कहते हैं रागी, मांडिया को रागी कहते जानते तो समझते मांडिया है ना. नाउ दिस इज नोन एज ब्रेंटामिन. ब्रेंटामिन मींस दिस इज कॉल्ड अ ब्रेन विटामिन बिकॉज ऑफ इट्स सफिशिएंट अमाउंट ऑफ मैग्नीशियम इन इट. बिकॉज ऑफ सफिशिएंट अमाउंट ऑफ मैग्नीशियम भीतर बहुत अधिक मैग्नीशियम अछि. सो इट मैग्नीशियम थिबा कारणरू बिकॉज ऑफ मैग्नीशियम कंटेंट, बिकॉज ऑफ मैग्नीशियम कंटेंट याकू कोन कहै दे ना, इटाकू ब्रेंटामिन बा ब्रेन विटामिन बोली कहै दे. सो दीज आर न्यूट्रिशियस ग्रेन्स. कोन बोल दीज आर न्यूट्रिशियस ग्रेन्स. नाउ व्हाट आर द फीचर्स ऑफ ओडिशा मिलेट मिशन? What are the features of Odisha millet mission? First, it was started targeting 72 blocks in 14 districts, focusing on areas with substantial tribal population. कोना जोटी substantial tribal population जो जगह मान करथिला ये 72 blocks in 14 districts. Excuse me. Especially the tribal region ऊपर ये focus कला है ना. Then later on it expanded to 142 blocks across 19 districts. Then it expanded to 142 blocks, 1500 gram panchayat and more than 15,000 village. यहाँ परठु देखियो जो मिशन शक्ति भी आसिथिला वुमेन एम्पावरमेंट पाई. मिशन शक्ति माध्यम रे ये मांडिया जातीय प्रोडक्ट गुडा को बहुत अधिक बिक्री होछ. नाउ you visit a मिशन शक्ति स्टोर और स्टॉल, you will be finding a lot of ragi related products जेमति कि रागी रा केक, मांडिया रा इडली पाइबे, रागी इडली,
देन रागी रु खजा पाइबे, मिक्सचर पाइबे, बिस्कुट पाइबे, कुकीज पाइबे, ये सब गुड़ा कोठ रही ना मांडिया रही सब गुड़ाक रागी बा मांडिया रही एंड टेस्ट तो समस्त जानी खाई इट इज वेरी टेस्टी अपार्ट फ्रॉम बीइंग न्यूट्रिशियस, वेरी न्यूट्रिशियस फूड, वेरी न्यूट्रिशियस फूड। तो यार ऑब्जेक्टिव है कौन ना, ऑब्जेक्टिव इज टू इम्प्रूव फूड सिक्योरिटी एंड न्यूट्रिशनल आउटकम। फूड सिक्योरिटी और न्यूट्रिशनल आउटकम इंक्रीज करिवो। मिलेट को पीडीएस पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम आईसीडीएस इंटीग्रेटेड चाइल्ड डेवलपमेंट सर्विस रे आपको इंक्लूड करिवो। सो मांडिया छतुआ भी मिलिबा आरंभ कला लोक देखिए, रागी छतुआ, रागी छतुआ, देन डिफरेंट प्रोडक्ट्स रागी एंड रागी एक्सपोर्ट को मध्य गवर्नमेंट बहुत प्रमोट कला। नाउ रागी इंडिया रागी एक्सपोर्ट होची कोठी ना, नेपाल, भूटान, श्रीलंका, म्यांमार, इवन यूएसए, यूके को मध्य हम रागी एक्सपोर्ट करवा स्टार्ट कले। तो स्पेशल एम्फासिस कहा पर, स्पेशल एम्फासिस ऑन सपोर्टिंग वुमेन फार्मर्स एंड कलेक्टिवली एसएचजी। दिस इज रन बाय सेल्फ हेल्प ग्रुप्स। Run by whom? This is run by self-help groups. Now, what are the objective and impact? What are the objective and impact of Odisha Millet Mission? ये मिशन नो सिंपल गोल होची to boost household millet consumption. To boost household millet consumption, leading to increased demand, higher household resilience, improved farmers' livelihood. So simply farmer income को बढ़ेवा होची यार ऑब्जेक्टिव। कौन आर ऑब्जेक्टिव ना, सिंपली फार्मर रो इनकम बढ़ेवार ऑब्जेक्टिव, हायर हाउसहोल्ड रेजिलियंस टू इंक्रीज करबा हो यार बेसिक ऑब्जेक्टिव। इट प्रमोट्स डिसेंट्रलाइज्ड मिलेट प्रोसेसिंग, डिसेंट्रलाइज्ड मिलेट प्रोसेसिंग को ये बढ़ाउची। इट एनकरेजेस बायोडायवर्सिटी थ्रू इंडिजिनस सीड्स फेस्टिवल, रेजेस अवेयरनेस अबाउट मिलेट्स न्यूट्रिशनल बेनिफिट। अवेयरनेस कैंप करियो रिलेटेड टू मिलेट्स न्यूट्रिशनल बेनिफिट। मिलेट मानकर कौन कौन न्यूट्रिशन अच्छी, न्यूट्रिशनल वैल्यू को ये प्रमोट करी, न्यूट्रिशनल वैल्यूज को ये प्रमोट करी। Now this initiative has been recognized nationally and internationally. So it is a model for other states, not only for states, other nations. UN Food and Agriculture Organization मध्ये आपको support करूची। It is getting support from UN Agricultural Food and Agricultural, UN Agriculture Food and Agricultural Organization. Now implementation केमती होची ओडिशा मिलेट मिशन नो एंड कोलैबोरेशन। यहाँ पर क्वेश्चन पूर्वरु आसी सारी ओडिशा मिलेट मिशन ऊपर क्वेश्चन पूर्वरु आसी सारी एबे मध्य now upcoming years also you can expect questions from this section। एडु क्वेश्चन एक्सपेक्ट करि परिबे। हेलो निरंजन, वेरी गुड इवनिंग, नमस्ते, जॉइन कले। ओके, नेक्स्ट पॉइंट देखिबा हमें implementation and collaboration. Now it is implemented through community based organizations, farmer groups, close collaboration with government departments like Mission Shakti. It mobilizes women SHG. कौन कौन it mobilizes women SHG. This mission emphasizes end to end development spanning production, processing, distribution, awareness, market linkage and all those. Now market linkage कहीं दरकार किए कोई परिवे, awareness because of its nutritional value, processing मु कहली raw रागी टाकू केमती different way बिस्कुट मिक्सचर रे प्रोडक्शन करि पारे, that is processing हैला। now distribution market को केमती पठै पारे। market linkage means देखो जेतरो कोनोसी बिजनेस रे कथा हमें देखुचे सबले दीटा जिंस हमकु देखिया पड़े। एठी हमें मिलेट मिशन कथा कहले ना, मिलेट मिशन एठी हमें दीटा जिंस देखिबा, गोटे हला बैकवर्ड लिंकेज आ गोटे हला फॉरवर्ड लिंकेज। बोला बैकवर्ड लिंकेज आ गोटे हला फॉरवर्ड लिंकेज। बैकवर्ड लिंकेज कोन आ फॉरवर्ड लिंकेज कोन? बैकवर्ड लिंकेज होची ई मिशन टाको कोन कोन स्ट्रेंथ मिलुची, इनपुट कोन मिलुची, सिंपली इनपुट एठी कोन मिलुची हमो ना। एठी कोन होची फॉरवर्ड लिंकेज रे कोन होची, फॉरवर्ड लिंकेज रे कोन होची ना, एटा को मार्केट सहित हम कनेक्टिंग विथ मार्केट, कनेक्टिंग विथ मार्केट हैला। मार्केट सहित एटा को हम एठी कनेक्ट करछु।
ये फॉरवर्ड और बैकवर्ड लिंकेज ऊपर लिखे. सो दिस इज मार्केट लिंकेज. बुझेला टू एंश्योर सिस्टमैटिक सपोर्ट फॉर मिलेट कल्टिवेशन एंड कंजम्पशन. Now, government department, NGO, local stakeholders, they play a significant role in expanding missions, outreach, and impact. So, this mission is a comprehensive effort to revive the staple of Odisha's traditional food culture. Now, the food culture change, food culture कौन? Culture includes food. Culture means what is cultivated is culture, including your food, dressing sense, language. ये सब को नहीं कि culture है. ना फूड कल्चर ओडिशा जो ट्रेडिशनल फूड कल्चर थिला जोटी हमें डिफरेंट डिफरेंट प्रोडक्ट को यूज करथिले से प्रोडक्ट गुडा को हमें रिवाइव करबा रिनोवेट करबा आउ थरे सेम प्रोडक्ट को हमें आउ थरे यूटिलाइज करबा को लागियो. बुझियला? इज दिस क्लियर? सो ओडिशा मिलेट मिशन ऊपर कोनोसी भी क्वेश्चन आसले लिखियबो ना लिखियबो? कैन यू राइट एनी क्वेश्चन ऑन मिलेट मिशन? लिख पारिबे तो बढ़िया. चलो ताले नेक्स्ट टॉपिक को जीवा हमें. ना ओडिशा रे एग्रीकल्चर ई पार्ट टा को बहुत जन स्टूडेंट नेग्लेक्ट कर दियन. ओडिशा पार्ट को ओडिशा एग्रीकल्चर कुह, इंडस्ट्री कुह, इकोनॉमिक्स कुह, ज्योग्राफी कुह, हिस्ट्री कुह, बहुत स्टूडेंट ई पार्ट टा को नेग्लेक्ट करन. ये पार्ट टा को नेग्लेक्ट करिवनी. ओडिशा रा एग्रीकल्चर ऊपर किछि इंपोर्टेंट टॉपिक हम आज डिस्कस करी. ओडिशा एग्रीकल्चर किछि इंपोर्टेंट पॉइंट या पर हम डिस्कस करी. ना प्रथम कथा 2023-24 रो करंट डाटा देछि मु हैला. Agriculture, allied agriculture sector, it accounts for 20.4% of gross state value added, and it employs 48.4% of total workforce in 2022-23. ये को डाटा अनुसार मु कहितले ऑथेंटिकेटेड डाटा लिखबे सबले. ऑथेंटिकेटेड डाटा कि ना PLFS, पीरियोडिक लेबर फोर्स सर्वे. सो रूरल एरिया रे मोर देन हाफ ऑफ टोटल वर्कफोर्स 53%, 54% कहि परिबे engaged in agriculture and allied sector. So it is estimated to grow at 3.5% in Odisha. Now ये देखो ओडिशा डाटा कंप्लीटली देन. तो ये जो डाटा नहीं चाहिए ऑथेंटिकेटेड कहीं की ना इधर बजट इकोनॉमिक सर्वे ए वाला डाटा ही अछि. गवर्नमेंट डाटा, whatever the data released by government, the same I am using here. ये गुडा को यूज करियो. Then crop sector is estimated to grow at 3.2%. Estimated to grow at 3.2%. Livestock fishery, it is estimated to grow at 2.5% and 3.6% respectively. Forestry logging sector, it should grow at 5.5%. It should grow at 5.5%. Crop accounts for 59% of total agriculture. Share of livestock fishery 16.7, 10.6. Forestry 13.8. Now this data जहाँ देली ये बहुत इंपोर्टेंट डाटा. कहार कंट्रीब्यूशन टा केते? सिंपल कथा कौन कहली टी कहार कंट्रीब्यूशन टा एथि केते. नेक्स्ट ये कुछ देयर इज अ नीड टू एक्सेलरेट ग्रोथ ऑफ लाइवस्टॉक एंड फिशरी सेक्टर. कहार ना टू एक्सेलरेट ग्रोथ ऑफ लाइवस्टॉक एंड फिशरी सेक्टर टू इंक्रीज एग्रीकल्चरल ग्रोथ इन स्टेट एंड टू एनहांस फार्मर्स इनकम. There is a need to accelerate crop diversification towards fruit, vegetable, pulses, oilseed. Now, Odisha रे problem कौन? आमे focus करछे only on cereals, धान and pulses, मुग बिरी यार ऊपर focus करछे. Now, ये कहूँ what we need a sustainable agriculture means we have to focus on crop diversification. Crop diversification means fruits से गला, vegetables से गला, pulses से गला, oilseed, cotton, ये सब को हमको देखिए पड़े. फ्रूट वेजिटेबल पल्सेस ऑइलसीड कॉटन ये सब को हमको प्रमोट करिया पड़े. क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन प्लस अलाइड एग्रीकल्चर कौन दरकार इन ओडिशा रे? क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन प्लस अलाइड एग्रीकल्चर.
क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन एंड अलाइड एग्रीकल्चर ये दुटा को ओडिशा हमको फोकस करिया पड़ियो क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन ने पल्सेस ऑयल सीड वेजिटेबल मोस्ट इंपोर्टेंट होची एटी फ्रूट्स वेजिटेबल्स एंड ऑयल सीड मोस्ट इंपोर्टेंट के फ्रूट्स वेजिटेबल्स ऑयल सीड्स pulses is about allied agriculture रे allied agriculture is about livestock बा fishery goattery हाँ कि नहीं fisheries goatteries livestock ये सब गुड़ा काम पे इटी important allied agriculture poultry farming now food grain production ना condition देखिवा food grain production increased by 24.3% to reach 144.4 lakh million ton in 2022-23 now देखो कितने अधिक increase है now it is a principal crop in the state it is increased by 28.4% कि rice principal crop rice increase है 28.4% now ये data लिखे पड़े fishery production steadily increased in the state over time and it is because of inland fishing production पाई fishery production ना कहीं की बढ़ी ना because of inland fishing का इंडिया रे अधिक fresh water fish import of fresh water fish declined by 20% fresh water fish declined by 20% commercial poultry sector needs to be focused to increase egg production and availability of eggs in India कौन कहली एग प्रोडक्शन मध्य एठी बढ़ुची agriculture allied sector contributes around 20% of gross state value added in 2023-24 as against 17.7% at all India level rural area रे more than half of total workforce यदि हम देखियो हम ऑलरेडी कहली 53.8% they are engaged in agriculture तने कहिवार अर्थ होउची जदि एते workforce engaged अछंती agriculture रे तले agriculture sector रो development is required or not को ताले agriculture sector रो development is required or not diversification and development is required or not answer is absolutely yes answer is absolutely yes yes it is required हाँ कि नहीं yes it is required चले को कौन कौन आमे कहा को डेवलप करिया दरकार मते को टेक्नोलॉजी बेस्ड एग्रीकल्चर आमे ओडिसा रे करिया कौन कहले टेक्नोलॉजी इंटेंसिव एग्रीकल्चर नाउ व्हाट इज को टेक्नोलॉजी को यूज करि परिबा टेक्नोलॉजी इंटेंसिव एग्रीकल्चर नाउ को टेक्नोलॉजी को यूज करि परिया मते को फर्स्ट यू कैन यूज let's say chemical technology को यूज करी कौन आनिबो ना फर्टिलाइजर नै केमिकल टेक्नोलॉजी को यूज करी कौन आनिबो फर्टिलाइजर मु कहि बायोटेक्नोलॉजी आकु यूज करी कौन आनि परियो बायोटेक्नोलॉजी को यूज करी कौन आनिबो you can use high yield variety seeds genetically modified crops है ना एटी फर्टिलाइजर इंसेक्टिसाइड पेस्टिसाइड एटी कले कोन ना बायोटेक्नोलॉजी को यूज करि परयो ना नेक्स्ट यू कैन यूज मैकेनिकल टेक्नोलॉजी को यूज कले यू कैन टॉक अबाउट ट्रैक्टर पावर टिलर है ना हार्वेस्टर कल्टीवेटर ये सब को यूज करि पारे यू कैन यूज इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी माने इंटरनेट को यूज करि पारे एठी कौन यूज करि पारे यू कैन यूज इंटरनेट हियर क्लियर these are different types of technology that we can use for technology intensive or technology driven means technology driven agriculture irrigation ने भी यूज करि पारे irrigation ने कौन यूज करि पारे sprinkle and drip irrigation
इरिगेशन में कौन यूज करियो ना स्प्रिंकल एंड ड्रिप इरिगेशन यूज करते बुझेला ना देखो ओडिशा रे जति एग्रीकल्चर होची ये कहा पर डिपेंडेंट एग्रीकल्चर इज ऑलवेज ज्योग्राफी डिपेंडेंट और क्लाइमेट डिपेंडेंट यस और नो एग्रीकल्चर इज ज्योग्राफी और क्लाइमेट डिपेंडेंट ओडिशा रे यू हैव 10 एग्रो क्लाइमेटिक जोन्स देखो एटी 10 टा एग्रो क्लाइमेटिक जोन कोन नॉर्थ वेस्टर्न प्लेट्यू नॉर्थ सेंट्रल प्लेट्यू नॉर्थ ईस्टर्न कोस्टल प्लेन ईस्ट एंड साउथ कोस्टल प्लेन नॉर्थ ईस्टर्न घाट इट्स ईस्टर्न घाट हाईलैंड सदर्न घाट्स वेस्टर्न ऑन्डुलेटिंग जोन वेस्टर्न सेंट्रल टेबललैंड देन मिड सेंट्रल टेबललैंड ना ये 10 टा होने एग्रो क्लाइमेटिक जोन इंडिया तो ये एग्रो क्लाइमेटिक जोन ऊपर डिपेंड करी ए एग्रो क्लाइमेटिक जोन ऊपर डिपेंड करी कि कौन क्रिएट होची ना योर एग्रीकल्चर इज कंप्लीटली डिपेंडेंट ऑन दिस सो डिफरेंट प्लेस रे इटी क्लाइमेटोलॉजिकल कंडीशन गुडा सेपरेट सेपरेट जेहेतु सेपरेट ना ए जोन गुडा देखो एटी अधिक तुम राइस प्रोडक्शन ए एरिया एटी देखो एटा होचे राइस प्रोड्यूसिंग बेल्ट एटी राइस प्रोडक्शन अधिक हो ये एरिया को जदी आसीबो एठी एपट एपट एरिया को आसीबो एटी वेजिटेबल प्रोडक्शन अधिक हो एठी के आसीबो जदी एटी पाखा भाई कॉफी प्लांटेशन पाइबो एरिया कॉफी प्लांटेशन पाइजो एटी हैला ना एपट ए मझी रीजन जदी देखो एठी ना एठी पाइबो फ्रूट्स कल्टीवेशन दा बेटर पाइबो लाइक जैक फ्रूट हेगला मैंगो हेगला एठी अधिक पाइबो so different place रे different production हमको मिलछ depending on what depending on the geography so this is agroclimatic zone this is geography specific geography I can say or this is climate specific this is geography or this is climate specific clear this is geography or it is climate specific now in Odisha रे mostly हमको कौन देखाते हैं farmers in Odisha they practice mixed farming so it not only increases the resilience of farmers ये resilience बढ़ाउछ farmer मानक resilience increase करूछ बुझिला resilience means no agriculture सहित if you practice allied agriculture सहित जदि हम allied agriculture practice करूछे ताले benefit कोन मिलिबो ना farmer distress ता कमी जो farmer distress कमी जो farmer ऊपर अधिक negative impact पड़िबो in case of climate change or in case of your crop loss समय रे ये समय फार्मर ऊपर इंपैक्ट पड़िबोनी काहे कि ना फार्मर रो एग्रीकल्चरल लॉस ले से जानि छु अलाइड एग्रीकल्चर रो किछ ना किछ प्रॉफिट बनै दिन से बुझिला जय जगन्नाथ मामा नेक्स्ट ना ओडिसा रे को टाइप रो फार्मर मोस्टली major farmers in Odisha they are small and marginal farmers landholders average land holding size कितना 0.9 hectare as per 10th agricultural census now livestock fishery they are critical to overall development livestock and fishery they are overall to they are on their fishery they are critical to overall development of agriculture next contribution and growth of agriculture sector first class no problem you continue with the class continue karo automatically guidance पाइ you don't worry continue करले class जानि परिबो कोन कोन पढु छ हम ठीक है all right next is what is the contribution and growth of agriculture in Odisha मुझे तो कोई भी agriculture allied sector they contribute around 20.4% to the gross state value added कितना 2023-24 तो शेयर कितना शेयर होची 17.7% at all India level average contribution of agriculture allied sector in Odisha it is around 20% in last decade all India average होची 18% but Odisha it is 20% so just little 0.2% just 2% more than
ऑल इंडिया एवरेज। नाउ यू कैन सी हियर ग्रीन कलर निया इंडिया आ येलो कलर टा निया ओडिशा। ये देख पारे समस्ते देखो ये येलोटा हूँ ओडिशा, ओडिशाटा जस्ट अबव इंडिया टिके टिके ऊपर ही रोच तलटा एटा ग्रीन टा देख यहाँ इंडिया मार्क कर पार्थिव समस्ते। तो एग्रीकल्चर अलाइड एग्रीकल्चर आम जो सेक्टर कहूचे ये कौन कौन सब सेक्टर अच्छी देयर आर 4 की सब सेक्टर्स कौन कौन क्रॉप लाइवस्टॉक फिशरी एंड फॉरेस्ट्री। कौन कहले क्रॉप लाइवस्टॉक फिशरी एंड फॉरेस्ट्री। शेयर ऑफ क्रॉप इन एग्रीकल्चर सेक्टर डिक्लाइन फ्रॉम 64.9% 2011-12 टू 59%। देखो क्रॉप रो शेयर टा डिक्रीज होची। शेयर ऑफ लाइवस्टॉक एंड फिशरी कौन होची ना ये इंक्रीज होची 2011-12 रु इंक्रीज होची केते 13% एंड 6.8% इन 2011-12 13 रु इंक्रीज हे केला 16% आउ 6 रु इंक्रीज हे केला 10%। बुझिला। नाउ यू सी कंपोजिशन ऑफ एग्रीकल्चर एंड अलाइड सेक्टर। येलो कलर टा होची क्रॉप, ब्लू कलर ता ऊपर लाइवस्टॉक, ता ऊपर ग्रीन हला फॉरेस्ट्री, ता ऊपर ब्लू हला होची फिशिंग एंड एक्वाकल्चर। नाउ यू कैन सी द शेयर एटी समस्त शेयर देखि परथि ना 2011-12 रे देखो एटा थिला केते क्रॉप थिला 64.9 नाउ लाइवस्टॉक थिला 13.7 फॉरेस्ट थिला 14.5 एवं फिशिंग थिला 6.8। नाउ सेम ये 64.9 क्रॉप रु इंक्रीज डिक्रीज हे गेला केतना 59% हे गेला 2022-23 सॉरी 2023-24। लाइवस्टॉक टा 13% रु एटी 16%, फॉरेस्ट टा 14% रु एटी 13%, फिशिंग टा 6% रु एटी 10%। बुझिला। नाउ दिस इज नाउ एंड सब मन रखिबार आवश्यकता नहीं बट यू हैव टू रिमेंबर द फर्स्ट वन एंड द लास्ट वन एटलीस्ट एतिक मन रखिବାକୁ पड़ियो। गुड इवनिंग राजा, वेरी गुड इवनिंग। ना ग्रोथ ऑफ एग्रीकल्चर एंड अलाइड सेक्टर एठी कोन होची मते को ग्रोथ ऑफ एग्रीकल्चर एंड अलाइड एग्रीकल्चर सेक्टर। एग्रीकल्चर अलाइड सेक्टर इन ओडिशा रे ग्रॉस स्टेट वैल्यू एडेड एस्टिमेटेड टू ग्रो एट 3.5% इन 2023-24 हैला। सो देयर इज डेफिसिट रेनफॉल एल निनो इफेक्ट ये सब गुडा कर इंपैक्ट पड़ुची ना एग्रीकल्चरल प्रोडक्शन कहा कहा ऊपर डिपेंड करे। एग्रीकल्चरल प्रोडक्शन कहाँ पर निर्भर करे होई परिबे। एग्रीकल्चरल प्रोडक्शन कहाँ पर निर्भर करे मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट इट डिपेंड्स ऑन द क्लाइमेट और इट डिपेंड्स ऑन द आई कैन से द ज्योग्राफी। सो क्लाइमेट रे को फैक्टर ना मोस्टली इन ओडिशा इट इज मानसून डिपेंडेंट ऑन इट इज मानसून डिपेंडेंट ओडिशा। एल निनो ला निनो इंपैक्ट मध्ये रहउची एल निनो रो इंपैक्ट रहउची ला निना रो इंपैक्ट रहउची बुझिला। क्लाइमेट आउ कहा पर इंपैक्ट करउची एग्रीकल्चर टा ना इरिगेशन फैसिलिटी केते अछि इरिगेशन। देन मार्केट रे डिमांड कोन अछि गवर्नमेंट पॉलिसी जेमती ओडिशा गवर्नमेंट आनिला मिशन शक्ति पर ओडिशा मिलेट मिशन। सो मिलेट गुडा कर प्रैक्टिस बढ़िला कि नहीं मिलेट प्रैक्टिस केते बेले पढ़िला ओनली व्हेन गवर्नमेंट केम विथ ओडिशा मिलेट मिशन नहीं नल कोन बुकला कि जेमती मार्केट रे जदि डिमांड अछि ताले हो फ्रूट्स वेजिटेबल डिमांड हला ताले हो। then the next is infrastructure जदि इंफ्रास्ट्रक्चरल फैसिलिटीज अवेलेबल हैला रोडवेज रेलवेज ट्रांसपोर्टेशन पई इरिगेशन फैसिलिटीज अवेलेबल हैला बुझिल। देन इज एग्रो क्रेडिट एग्रीकल्चर सेक्टर को केते क्रेडिट इटा पीएसएल प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग भितर आसे इटा प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग भितर आसे हैला पढ़ी दिल कहि दिल ऑलरेडी प्रीलिम्स में पढ़ला प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग रे आसे एग्रीकल्चर एजुकेशन रिन्यूएबल एनर्जी एमएसएमई देन योर कॉटेज इंडस्ट्री ये सब गुडा का आसे बुझिल। एटी कहला में एग्रो क्रेडिट केते एग्रो क्रेडिट मिलुची एग्रो क्रेडिट इज प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग।
क्लियर आउ कौन आउ कहा पर एग्रीकल्चरल प्रोडक्शन डिपेंड करूची ना लेबर सप्लाई ना जदि ओडिशा रु सब लेबर गुडाक पळेबे कोडी बाहर को माइग्रेशन हो जिवो बाहर जाई दादन खटिबे ताले ओडिशा रे एग्रीकल्चर करिवो की बा जहा को हम कहि परियो वी कैन से एग्रो एंटरप्रेन्योरशिप agriculture is not a symbol of backwardness agriculture is not a symbol of backwardness agriculture कोन ଗୋଟେ symbol of backwardness की now 2002 already हमें declare करि सरची government of India agriculture is the prime moving force means agriculture has the potential growth potential for the entire economy को grow करिवार क्षमता agriculture पाखर अछि so agro entrepreneurship बढ़िया दरकार लोक मानक भीतर बुझिला कोन कहले एग्रो एंटरप्रेन्योरशिप स्किल बढ़िया दरकार लोक मानक भीतर नो एई फैक्टर गुडा को जदी अछि हम पाखरे देन वुमेन पार्टिसिपेशन इन एग्रीकल्चर आल्सो वुमेन पार्टिसिपेशन इन एग्रीकल्चर वुमेन पार्टिसिपेशन आको बढ़ी परिबा बा वुमेन फ्रेंडली टेक्नोलॉजी रहिले वुमेन माने पार्टिसिपेट करि परिबे इन द सेम वे यू कैन आल्सो टॉक अबाउट एमएसपी एंड ऑल मिनिमम सपोर्ट प्राइस बा एफआरपी जेम रहला फेयर एंड रेम्युनरेटिव प्राइस फॉर सुगर केन हैला ये सब गुडा कर मध्ये इंपैक्ट रही एग्रीकल्चरल प्रोडक्शन ऊपर नाउ क्लियर एग्रो प्रोडक्शन को फैक्टर ऊपर डिपेंड करूची ना नहीं एग्रीकल्चरल प्रोडक्शन को फैक्टर ऊपर डिपेंड करूची बुझेला ना बुझी पाले यस राजा क्लियर समस्त बुझी पाले बहुत बढ़िया अब देखो पूरा लॉन्ग क्वेश्चन रे जहा लिखिबे मेंस परीक्षा रे सारी ऊपर डिस्कशन करूची नो ओनली क्लास जे अटेंड करूची भलो भाबरे मन दे कि सी आंसर लिखि परियो द थिंग इज दैट you have to be cautious and you have to be attentive in the class तबे आंसर लिखि परिबे किछ असुविधा होबा ये पार्ट गला दिस पार्ट इज ओवर नेक्स्ट पार्ट और एटी टोटल डाटा देछि देखि परिबे क्रॉप लाइवस्टॉक फॉरेस्ट्री लॉगिंग और फिशिंग एक्वाकल्चर को वर्ष केते परसेंट 2019 रु आरंभ करी 23 24 पर्यंत डाटा दे दिछि यू कैन चेक आउट क्रॉपिंग पैटर्न ना क्रॉपिंग पैटर्न काहे की इंपोर्टेंट क्रॉपिंग पैटर्न माने को चाष परे को चाष करिवे आमे देखुचे धान चाष करूचे धान चाष कला परे कोन करछे पल्सेस मुग बिरी आनुचे काहे की राइस प्रोडक्शन परे पल्सेस प्रोडक्शन काहे करूछो बिकॉज ऑफ नाइट्रोजन फिक्सेशन राइस प्रोडक्शन ना नाइट्रोजन एक्सट्रैक्ट करनी अधिक सॉइल तो तापर पल्सेस ने आसीले से नाइट्रोजन फिक्सेशन बैक्टीरिया थिबो से नाइट्रोजन फिक्सेशन कर दो सो दैट सॉइल हेल्थ कैन बी मेंटेन्ड so cropping pattern is important kon pai na to improve land use efficiency and to protect the soil nutrient बुझिला so 2022-23 जदि हम देखिया नेट सोन एरिया इन ओडिशा इट वाज 54.6 लाख हेक्टर हैला केते इट इज 20 ओडिशा इट इज stood at 54.6 lakh hectare accounting for 35.1% of total geographical area. Gross crop area increased by 2.5% from 85.5 lakh hectare to 85.5 to 87.6 lakh hectare. बुझिला this is the important important data related to cropping pattern. Next, now cropping intensity. Next point is about increasing cropping intensity, particularly rice fallow area गुडा increasing irrigation coverage बढ़िले rice fallow area गुडा जोड़ा rice fallow area कुछ rice production ना जेमते अधिक होई परियो because rice is the dominant crop in Odisha. Now gross cropped area को यार share टा decline करूची it is declining देखो एट को प्रोडक्शन केते होछ राइस प्रोडक्शन मैक्सिमम 46% पल्सेस 22% ऑयल सीड 6% फ्रूट 4% वेजिटेबल 8% फाइबर 3 अदर क्रॉप्स 5 न्यूट्रिशनल सीरियल्स 3% बुझिला so this is the, see now you can see the cropping pattern को क्रॉप ओडिसा रे केते प्रोडक्शन होछ
कौन कहले को क्रॉप रो प्रोडक्शन ओडिसा रे केते नाउ रिलेवेंट डाटा isn't it relevant relevant data एटा को हम यूज करि परिबो आंसर शीट रे आपको यूज करि परिबा कि नहीं now this is very relevant and this is what examiner searches looks in your answer sheet एटा ही दरकार ये डाटा को हमको मेंस आंसर पर लिखिवार अछि पकेवार अछि हां कि नहीं राजा करेक्ट so unless you make this type of diagrams unless you put all this data in the answer sheet you cannot your answer cannot be an ideal or topper's answer तो टॉपर आंसर जदि करिवार अछि निज आंसर को ना तले ए बलिया रिलेवेंट डाटा दबा पड़ियो एंड ये डाटा हम आनिले कोडू ना पूरा करंट डाटा गवर्नमेंट डाटा मु देछि ऑथेंटिकेटेड डाटा आइदर budget or economic survey or world bank data OECD data RBI data so you can completely rely on this data ये डाटा ऊपर अपन रिलाय करके आंसर लिखि परिबे and surprisingly the topics like agriculture and industry they are common to your geography syllabus as well as to economic syllabus ये geography रे भी अछि economics रे भी अछि so थरे पढिबे दीटा जगह काम लागियो now agro climatic zones has economic impact as well as geographic impact agro climatic zone economic impact भी अछि geographic impact भी अछि बुझिला next production of major crops देखो मेजर क्रॉप्स कौन कौन प्रोडक्शन ग्रोथ रेट केते परसेंट हो फूड ग्रेन ए देखो फूड ग्रेन प्रोडक्शन सेरियल्स रे हमको देखियो कोन मिलछि देखो 26.3 ग्रोथ रेट नो राइस एति की मेज एति की मिलेट्स एति पल्सेस रे एति हरर ग्राम अदर पल्सेस ना ये गला पूरा ब्रेक डाउन दैछि को पल्सेस बा को प्रोडक्शन हमें केते करू छी अच्छा तब रसिया फूड ग्रेन प्रोडक्शन ने सबुतो अधिक प्रोडक्शन होची कार जानि राइस प्रोडक्शन राइस constitute 84% of total food grain production 28.4% growth हैला now key contributor किए food grain production na Bargarh district is the key contributor to food grain production the 10% share in total production top 5 districts किए ओडिशा रे टॉप 5 डिस्ट्रिक्ट्स किए बरगढ़ गंजाम कलाहांडी मयूरभंज बरगढ़ गंजाम कलाहांडी मयूरभंज केउंझर ये पांचटा होतनी टॉप 5 फूड ग्रेन प्रोड्यूसिंग स्टेट्स मन रखियो हैला नाउ मिलेट प्रोडक्शन कथा ऑलरेडी डिस्कस कर छ हाउ इट इज इंक्रीज्ड बाय 121% देन ऑयल सीड प्रोडक्शन ने सबुटु अधिक प्रोडक्शन ओडिसा रे कोन है ना ग्राउंड जोडा को हम कोन कहलो ग्राउंड सीड सॉरी ग्राउंड नट प्रोडक्शन मेजर कंपोनेंट ऑयल सीड प्रोडक्शन बादाम जोड़ा को डिस्ट्रिक्ट टॉप डिस्ट्रिक्ट ना कलाहांडी इज द टॉप डिस्ट्रिक्ट तापर भद्रक ना अदर डिस्ट्रिक्ट्स कलाहांडी जाजपुर मालकानगिरी ढेंकानाल गंजाम टॉप 5 डिस्ट्रिक्ट्स these are top 5 districts yes राजा करेक्ट बरगढ़ गंजाम कलाहांडी केउंझर मयूरभंज इटम दे दीजिए एग्जैक्ट डिटेल्स दे दीजिए कलाहांडी जाजपुर मालकानगिरी ढेंकानाल टॉप ऑयल सीड प्रोड्यूसिंग डिस्ट्रिक्ट्स इन ओडिशा मन रहिला now fruits vegetable production इंडिया रे ओडिशा रे बढ़ुची केउंझर सुंदरगढ़ कोरापुट अनुगुल बलांगीर गंजाम ढेंकानाल टॉप वेजिटेबल प्रोड्यूसिंग डिस्ट्रिक्ट्स एत्ती की डिस्ट्रिक्ट मिसी के 35% ऑफ टोटल प्रोडक्शन ओडिशा रे करता है 35% ऑफ टोटल प्रोडक्शन हैला कौन प्रोडक्शन हुए मेजर फ्रूट कौन ना मैंगो बनाना जैकफ्रूट देन मयूरभंज कोरापुट अनुगुल सुंदरगढ़ कंधमाल दे आर टॉप 5 डिस्ट्रिक्ट्स कंट्रीब्यूटिंग टुगेदर अराउंड 33% ऑफ टोटल फ्रूट प्रोडक्शन मध्ये ई डिस्ट्रिक्ट मानको अधिक आस्ता है 33% फ्रूट प्रोडक्शन ई डिस्ट्रिक्ट मानको आस्ता है केते कहली 33% फ्रूट प्रोडक्शन ई डिस्ट्रिक्ट मानको आस्ता है मो कथा बुझी होची फ्लोरिकल्चर मीन्स जेटा तुमर फूल चाष
ना सबुठु अधिक प्रोडक्शन एटी कोन मैरीगोल्ड प्रोडक्शन जो गेंडू फूल कहउछ कुसुम फूल जहा सो देयर इज अ फ्लोरिकल्चर मिशन ओडिशा के 2022-23 टू इंक्रीज द प्रोडक्शन total area under this production increased to 19.8%. 19.8% total area of floriculture under. Productivity of major crops. Major crop productivity already we discussed kali. Rice yield increased by 5%. Pulses seeds increased 1.6% only. All India 2.5% increase होची, but Odisha 1% only productivity. ताले एटा कोन एठी करि परिबा ना बैलेंस्ड यूज ऑफ केमिकल फर्टिलाइजर्स लाइक एनपीके एंड ऑल. बायो फर्टिलाइजर fertilizer consumption in Odisha declined from 73 kg per hectare to 66 kg per hectare. Now fertilizer use टा कमिबाटा भलो ना खराब? fertilizer use टा कमिबाटा भलो ना खराब? Silk production. Fertilizer consumption, unnecessary consumption has to be reduced. Unnecessary fertilizer consumption has to be reduced. Pesticide consumption increased by 20%. Pesticide consumption increase. Now these are carcinogenic in nature. These are carcinogenic in nature. ये ही कैंसर सृष्टि करुछ. Now बरगड़ इज द बरगड़ को ओडिशा रा कैंसर कैपिटल कह जाउछ काहे कि कैंसर अधिक होउछ बरगड़ रे अधिक कैंसर होउछ काहे ना बिकॉज ऑफ यूज ऑफ पेस्टिसाइड्स. बहुत अधिक पेस्टिसाइड एटी व्यवहार करा जाउछ. देखो एनपीके प्रोडक्शन इंक्रीज डिक्रीज होइछ 68.7 थिला 2017-18 रे 2022-23 रे केते ना 66.2 केते डिक्रीज टू 66.2 हैला. ना ओडिशा एग्रीकल्चर क्लियर बुझियला ना नहीं ओडिशा रा एग्रीकल्चर पार्ट क्लियर. नेक्स्ट एमएसपी मिनिमम सपोर्ट प्राइस एटी कोन हुई एमएसपी रे कोन हुई ना मार्केट इंटरवेंशन बाय द गवर्नमेंट into ensure agricultural producers against any sharp fall in the farm price. यदि कोनोसी कारणरु farm price reduce करि जाउची यदि reduce करि जाउची ताले कोन ना गवर्नमेंट एटी सपोर्ट करियो. कोन करियो गवर्नमेंट सपोर्ट करियो. एटा केते बेला अनाउंस हुए? इट इज अनाउंस्ड एट द बिगिनिंग ऑफ द sowing season for certain crops on the recommendation of CSCP. Recommendation of CSCP. Major objective कोन? To support farmers from distress sale. To support farmers from distress sale. Now currently MSP covers for 24 commodities. कौन ना cereals like paddy, wheat, barley, jowar, maize, 5 pulses, gram, हरर, मूंग, उड़द, lentil ये सब बुझिला. Now jute, then tobacco ये सब भी included MSP. एटी मध्य MSP include. राजा 30 मिनिट्स लेट ठीक अच्छे 30 मिनिट्स देखी दो रेकॉर्डेड देखी दो.
So MSPs are fixed at incentive level to fulfill following purpose. कौन ना to induce more investment by farmers in farm sector, to motivate farmers to adopt improved crop production technology, to enhance production. Yes, these are the objective of MSP. Then market intervention scheme. एटा कोडी लागे मार्केट इंटरवेंशन स्कीम दा पेरिसेबल प्रोडक्ट रे लागे. पेरिसेबल मीन बेसिकली हॉर्टिकल्चरल प्रोडक्ट्स, वेजिटेबल्स एंड फ्रूट. कोथर लागे एटा फ्रूट और वेजिटेबल लागे पेरिसेबल प्रोडक्ट मान. एटा गोटे कंडीशन अछि. स्टेट गवर्नमेंट जदि रिक्वेस्ट करिवो कहा को सेंट्रल गवर्नमेंट को केते बेले ना व्हेन देयर इज अ इंक्रीज और डिक्रीज इन द प्रोडक्शन. जदि 10% increase or decrease in the production as compared to the previous normal year, then the state government can approach the central government for this. So on the specific request of the state government or union territory, the central government will interfere and the central government will bear 50% loss. Kete? Central government kete percent loss bear karibo? 50. Now jodi eta heithibo kete north eastern state, ताहाले सेंट्रल गवर्नमेंट नब 75, स्टेट नब 25%. केवल नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट पे. अदर स्टेट पे 50-50. फॉर अदर स्टेट दिस इज कॉल्ड मार्केट इंटरवेंशन स्कीम. बुझेला मार्केट इंटरवेंशन स्कीम कौन? FRP, fair and remunerative price, it is minimum price for sugarcane on the recommendation of CSEP it is declared. आउ किसी स्टेट अच्छा लाइक पंजाब, हरियाणा, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश एमाने तांको माने तांको स्टेट रे एफआरपी पर आउ गोटे प्राइस मध्ये डिक्लेयर करथान इन देयर ओन स्टेट. मिनिमम प्राइस इज आल्सो देयर. इज दिस क्लियर? बुझिए गला ना? डाउट अछि जदि को ताले कोन देखिले हम आज रो क्लास? एग्रीकल्चर तो देखिले सबुठ इंपोर्टेंट देखिले ओडिशा मिलेट मिशन. सबुठ इंपोर्टेंट कोन देखिले? ओडिशा मिलेट मिशन. फीचर्स, ऑब्जेक्टिव्स, इंपैक्ट ऑफ मिलेट मिशन, इंप्लीमेंटेशन एंड कोलैबोरेशन. ओडिशा एग्रीकल्चर ऊपर डिस्कशन कले, की फैक्ट फिगर डिस्कस कली एटी. क्रॉप प्रोडक्शन कथा कहली, अलाइड एग्रीकल्चर कथा कहली, फिश प्रोडक्शन, फ्रेश वाटर फिश प्रोडक्शन कंडीशन कोन, ग्रॉस स्टेट वैल्यू एडेड रे कंडीशन कोन, कौन कौन टेक्नोलॉजी एटी यूज करि परिया कहली एग्रीकल्चर रे. 10 एग्रो क्लाइमेटिक जोन ऊपर डिस्कस कली. कंट्रीब्यूशन एंड ग्रोथ ऑफ एग्रीकल्चर ऊपर डिस्कस कली. कंपोजिशन ऑफ एग्रीकल्चर एंड अलाइड सेक्टर, ग्रोथ ऑफ एग्रीकल्चर एंड अलाइड सेक्टर डिस्कस कले हमें. एग्रीकल्चरल प्रोडक्शन को फैक्टर ऊपर डिपेंड करूची कहली कि कहि परिबा एग्रीकल्चरल प्रोडक्शन को फैक्टर ऊपर डिपेंड करूची. गवर्नमेंट पॉलिसी को टाइप आणुची, मार्केट रे डिमांड केते अछि, एमएसपी एफआरपी कोन अछि, इरिगेशन फैसिलिटी अछि कि नै, वुमेन पार्टिसिपेशन, वुमेन फ्रेंडली टेक्नोलॉजी यूज करा जाउची कि नै, हैला. एग्रो एंटरप्रेन्योरशिप रो डिमांड केते, लेबर सप्लाई अछि कि नै, क्लाइमेट बा ज्योग्राफी रो इंपैक्ट, एल निनो, ला निना, मानसून, ये सब हमें देखिले, हैला. ठीक अछि. तापर को प्रोडक्शन केते होउची ओडिसा रे ताकू देखिले. फूड ग्रेन प्रोडक्शन रो मेजर डिस्ट्रिक्ट किए कहली? बरगढ़, गंजाम, कलाहांडी, मयूरभंज, केउझर. ऑयल सीड रे कलाहांडी, जाजपुर, मालकानगिरी, ढेंकानाल, गंजाम. फ्रूट्स वेजिटेबल्स यदि हम देखिया मयूरभंज, कोरापुट, अनुगुल, सुंदरगढ़, कलाहांडी फॉर फ्रूट्स लाइक मैंगो, बनाना, जैक फ्रूट. सुंदरगढ़, केउझर, कोरापुट, अनुगुल, बलांगीर, गंजाम, ढेंकानाल फॉर वेजिटेबल प्रोडक्शन. दिस इज फॉर वेजिटेबल प्रोडक्शन. क्लियर? मेजर क्रॉप मानकर प्रोडक्टिविटी ऊपर हम डिस्कस. This is what we discussed. I hope everyone is clear with today's discussion. बहुत समझते बुझी पाले. आउ को पॉइंट देखले टी एमएसपी कथा भी कहली. एमएसपी ऊपर भी डिस्कस कली, एमएसपी एफआरपी भी कहली. और बहुत टॉपिक अछि एग्रीकल्चर भीतर, छोट छोट टॉपिक हम डिस्कस करिया. पुणी आगो आउ कुछ इंपोर्टेंट टॉपिक नहीं के आसी मु पुणी नेक्स्ट वीक. आई होप ये क्लास करूछन्ती समस्ते. नोटिफिकेशन जो मान पाखे पहुंची नथिला एबे पहुंचुथिबो. तो क्लास ऑलरेडी चली लानी गोटे सप्ताह हैला. सो जो माने करी नाहंती क्लास रिकॉर्डेड क्लास कर देबे. इकोनॉमिक्स पूरा कवर करिछु. बहुत इंपोर्टेंट टॉपिक कवर करछि. पूर्व ग्रोथ, डेवलपमेंट, हैप्पीनेस,
ओडिशा स्पेसिफिक बैंकिंग ऊपर डिस्कशन करिछि हैला बैंकिंग ऊपर डिस्कस करि सब पढिछि पढैछि ठीक अछि लेट्स वाइंड अप दिस क्लास दैट्स ऑल फॉर दिस पहले हम देखिले कोन ना एग्रीकल्चर इन ओडिशा ओडिशा मिलेट मिशन एमएसपी एफआरपी एमआईएस एमआईएस ये सब पॉइंट डिस्कस कर ठीक अछि मितांजलि जॉइंट गुड ठीक अछि किछि क्वेश्चन एनी क्वेश्चन ठीक है दैट्स ऑल फॉर दिस सेशन थैंक यू गुड नाइट